जय जगन्नाथ डियर स्टूडेंट्स आशा करते समस्त बहुत बढ़िया थे परीक्षा जबरदस्त प्रिपेरेसन करेंगे सब तो पे आज यूजुअल आम सेसन जमी चली तो समस्त आशा कर समस्ते डेली क्लास देखुए और शिखुवे विदाउट फर्दर डिले चलते आरंभ कर आज सेसन को क्वेश्चन नंबर 1 30 क्वेश्चन अच्छे टोटल तो आपण मैंने चाहिए निजर प्रोग्रेस चेक करेंगे है आउ सबुठ बेस्ट वे हूँ प्रोग्रेस चेक करार यही टाइम जो जिते कि आम प्रत्येक दिन क्लास नहीं आसचु 40टा क्वेश्चन रोचे तो तुम चाहिए देखिपर जो मनकर आज 10 तारीख मोर केतटा आंसर ठीक रोचे 40टा रू है आउ गोटे आसंता काली मुझे कौन करी सहित टाली करी कंपेयर करी देखिए आंसर ओके सो इट इज अप टू यू इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इफ यू वांट टू ग्रो अप देन डेफिनेटली यू मस्ट डू इट ओके तो ये देख जो क्वेश्चन अच्छी यहाँ अच्छी एरर डिटेक्शन सेंटेंस टाइम पढ़ी दूसरी आम कौन करिया फाइंड आउट करिया एरर The Tata Group owns many industries that are spread across the globe. बुझला देख ये भलसे ए सेंटेंस रे ए टू ए पर्यंत एटा गोटे क्लॉज ए टू ए पर्यंत एटा हला आउट क्लॉज बुझला तो फर्स्ट क्लॉज रो सब्जेक्ट हला कोडा एटा तो प्रेडिकेट को जाके प्रेडिकेट हला तमरो ए टू ए पर्यंत हला सेकंड क्लॉज रो तमरो कोन माने सब्जेक्ट हला एटा तो बाकी ए जो टोटल पार्ट ए टू ए पर्यंत एटा हला तार प्रेडिकेट क्लियर तो दीटा क्लॉज को कनेक्ट करने आमर ये सेकेंड क्लॉज रोटा सब्जेक्ट सेटा कंजंक्शन भाव में यूज हो क्लियर ताने जो दैट अच्छी तो दैट मल्टीपल रोल अच्छी तो यहाँ है गोटे रिलेटिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन है जो टोटाल क्लॉजटा देखुं दैट पाखु एपर्यंत ग्लोब पर्यंत यहाँ मॉडिफाई कर इंडस्ट्रीज को ताने टोटाल क्लॉजटा फंक्शन कर भाव में कौन भाव में एडजेक्टिव भाव में तो जेकोसी क्लॉज जदि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन रू आरंभ हुए आउ तार पूर्ववर्ती नाउन को मॉडिफाई करे बुझेला तो सेटा हम एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज को हला तो जो रिलेटिव क्लॉज सॉरी मुटा पी लिखि देछि एटा आरसी लिखि रिलेटिव क्लॉज हला तो रिलेटिव क्लॉज रो जतबेले दैट रु आरंभ हुए भले कि सुन मु कहूची रिलेटिव क्लॉज ता जतबेले दैट रु आरंभ हुए तो ता पूर्वरु केबे भी कमा बस परिबनी हला तो इन अदर वर्ड्स जदि तुम देख मेन क्लॉज पर कमा बसची तो तापर कौन बसची दैट बसची है तो ताने दैट क्लॉज यूज होती तो ताने से जो दैट यूजटा कौन अच्छे भूल अच्छे ये आम कौन करवा जदि ठीक करने चाहिए तो दैट परिवर्ते आम कौन लगेदेवा व्हिच लगेदेवा एनीवे एरर डिटेक्शन क्वेश्चन रे तुम पचरा जाए कौन लगे पड़ो है आमको ये कौन करा पड़े लगे पड़े आई मीन केवल पार्टा को मार्क करा पड़े तो यही क्वेश्चन रो आंसर मुझे कही सारे तो करेक्ट आंसर हो तुम बी फॉर बॉम्बे है तो दैट परिवर्ते आम से बस कौन व्हिच तो आशा करुँच समस्त बुझा पड़ो जब आप बुझिपारे क्लीयरली मत लिखिकी दिंतु जहाँ सर बुझा पड़ा ओके तापर आम जा क्वेश्चन नंबर 2 को फटाफट देखते क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन सी हैज नॉट बीन टू द रेस्टोरेंट मच लेट है से कहूँ चाहूँगी माने एबे रिसेंटली है तो सी एते रेस्टोरेंट को विजिट करूनी तो सेंटेंसटा प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव स्ट्रक्चर यूज होती बुझला तेणु ये जोड़ा देखुं मच लेट जो मच लेट मच जगह ऑफ बस ऑफ लेट अर्थ हूँ रिसेंटली हाली रे है एबे तुम कहीपर दिस डेज भी कहीपर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आर नॉट योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर आउट ऑफ टाउन है तो ये क्वेश्चन देखते समस्ते भल भाव देखो ये गोटे इंटरोगेटिव सेंटेंस अच्छी आर सहित है तुम सेंटेंस आरंभ होती तो आर नॉट योर फादर तो योर फादर है तुम कौन सब्जेक्ट बुझेगा तापर योर एल्डर ब्रदर है आ गोटे सब्जेक्ट तो दीटा को आम कन्वर्ट कले क्या द्वारा एंड द्वारा बुझेगा जदि यहाँ बुझिपारे ताल देखी दिंतु फादर और ब्रदर है दुई जन तो से लगे आम कौन लगे आर लगे तो सेंटेंसटा नंबर नेगेटिव इंट्रोगेटिव अच्छी से लगे नॉट लगिला आम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लगे है बट प्रॉब्लम कौन है तो प्रॉब्लम हूँ तुम ये जो योरटा दी थर लिखाई आर नॉट योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर तो दरकार नहीं दी थर लिखा आउ ऑब्वियस होची आम फास्ट टाइम काटी पारानी तेणु जदि फास्ट काटी पारानी सेकेंडटा काटा बुझला तेणु ये जब आम योर काटी दौचे तो सेंटेंसटा कौन हम एब्सोल्युटली ग्रामेटिकली एरर हम सॉरी ग्रामेटिकली मीनिंगफुल हम लॉजिकल हम बुझला तो ये जो आनटा माने आम जो योरटा लिखिले फास्ट रे तो से योरटा एक्चुअली कॉमन नहीं गले आम ये फादर पाई आउ का ब्रदर पाई एल्डर ब्रदर पाई तेणु ये जो योर आवश्यकता ना है तो दैट पार्ट कंटेन्स एन एरर
which you must have understood. चलो question number 4. It had a bright blue cover which he was careful not do soil. बुझला? Which he was careful not do soil. बुझला? तो देखि दियो it had a bright blue cover. एटा हला तमर गोटे क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब तापरे देखो कमा परे हम कहउतले बे जेतळे which रू बा that रू आरंभ होतो गोटे क्लॉज तो ता भितर कोटा ठीक आ कोटा भूल जदि एटी that थांता ताले एटा भूल हे थांता बट एटी which अछि तो which टा कोन हिची डिस्क्राइब करछि टोटल टा ए टोटल क्लॉज को जेतବେଳେ तमर WH वर्ड बा which टा कोनसी गोटे क्लॉज परे आ कमार परवर्ती ए जो क्लॉज टा देखो समझते ए कवर कवर पर कोन बसछि कमा बसछि तो कमा पर जदि बस्ती सेटा हला आ मॉडिफाई कर हां जदि कमा पर बस्तिबो ताले सेही केस रे ए जो व्हिच क्लॉज टा टोटल सेंटेंस टा को मॉडिफाई करे माने तार पूर्ववर्ती सेंटेंस टा को मॉडिफाई करे बुझिले तेणु ए सेंटेंस टा तमर एब्सोल्युटली कोन अछि ठीक अछि बट एठी प्रॉब्लम अछि माने ए सेंटेंस टा एई पर्यंत ठीक अछि तापर केयरफुल नॉट डू सॉइल देखो एठी डू ढाला तमर कोन मॉडल्स नॉट ला एडवर्ब तो एठी जो हमर डू जोडा देछि आई एम सॉरी डू टा को मॉडल कह देली डू टा तमर कोन मेन वर्ब पेस फॉर्म रे अछि हला तो एठी हमें कोन करबा नॉट पर टू लगेबा नॉट टू डू सॉइल एटा हबा आंसर ओके नॉट टू गो कहबा नै कि नॉट गो नॉट टू राइट कहबा ना कि नॉट राइट जदि हमें नॉट राइट नॉट पर लगेबा राइट तापर से कड़े माने नॉट पूर्व लगेबा डू नॉट राइट डू नॉट गो एमते हम कहि परिबे समस्त बुझले ना नहीं लेकिन मते को देले एकडी हार्डली हार्डली पर कोन बसे व्हेन बसे स्कैर्सली पर व्हेन बसे नो सूनर पर ध्यान बसे नॉट ओनली सहित बट आल्सो बसे ए सब जिंस हम जानिचे हला तन तम मध्ये डायरेक्टली ए क्वेश्चन आंसर समस्त जानि सरिवनी तो जो वेयर लिखा है एटी कोन बसिबो एटी व्हेन बसिबो ओके हार्डली हार्ड आई रीच द एग्जीबिशन व्हेन आई लर्न अबाउट द मेजर रबरी माने सेनेस मीनिंग होची वो एग्जीबिशन रे पहुंची छी ना नहीं तो मु जानिया पाइली गोटे बहुत बड़ रबरी हिच बोली डकायती हला The fire engine came rushing down the hill. The fire engine came rushing down the hill. So question number 6 देखो वाला की एसएनएस रे हमर सब्जेक्ट हला की फायर इंजन हला तो एठू ए पर्यंत एठा तो प्रेडिकेट also देखिबो तो फायर इंजन हला तो नाउन फ्रेज सब्जेक्ट आउट नाउन फ्रेज तो डाउन डाउन पर लिखा है द हिल एटा मध्ये गोटे नाउन फ्रेज तो नाउन हो कि नाउन फ्रेज हो कि प्रोनाउन हो सेंटेंस रे आइदर एटा सब्जेक्ट हेबे नले ऑब्जेक्ट हेबे बुझला तो ए जो फायर इंजन टा एटा तमर सब्जेक्ट हला ता माने ए जो नाउन फ्रेज टा एठी एटा हबो कोन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कार थाए ट्रांजिटिव वर्ब रो नले प्रीपोजिशन रो एबे देखो ध्यान से तो आ पूर्व जो वर्ड टा बसची एटा तो ट्रांजिटिव वर्ब नो तो जति एटा ट्रांजिटिव वर्ब नो ताले एटा कोन एटा ला प्रीपोजिशन क्लियर तो डाउन तमर प्रीपोजिशन भाव रे यूज हेची तो करेक्ट आंसर हला कोन बी बिफोर वर्ब Wait a minute. Question number 7. He wants RS 500 for that watch. He won't be satisfied with less. हला तो देखो वाला कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन टा एटा हमर एटा अंडरलाइन हेची पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करिवार अछि तो हमर ए सेंटेंस रा मीनिंग तो बुझ साइलेंट फर्स्ट सेंटेंस रा तो दरकार डिस्कस करबा सेकंड सेंटेंस रे मध्ये हम मीनिंग बुझ साइलेंट बाकी पार्ट ऑफ स्पीच देखियार अछि जो विथ देख देखुजो विथ वाला प्रीपोजिशन तो प्रीपोजिशन पर सबल कोन बसे ऑब्जेक्ट बसे ऑब्जेक्ट रा पार्ट ऑफ स्पीच आइदर नाउन हेता है किबा प्रोनाउन हेता है तो एटा तो तमर प्रोनाउन नो ताले एटा कोन एटा हला नाउन ओके तो विथ पर जोडा बसची विथ हला तमर प्रीपोजिशन और लेस टा हमको नाउन भाबिया पड़िबो नाउन मानिया पड़िबो तेनु करेक्ट आंसर हला सी कौनसी गोटे एनालिसिस जोटा आपण मानु कंफ्यूज करूची बा बुझी पार नाहंती तो आपण माने मते लेखि के देले इफ इट इज कोन मते लागियो जे नै एटा ठीक ठाक अछि आपण ऊपर अछि पिलाकर जेन्युइन डाउट्स रही सेटा को ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଏଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକରେ ବୁଝେଇବି ହେଲା ବା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ବୁଝେଇବି ଦେଖ ବୋଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ'ଣଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲା
कौन नेगोशिएट करियाटा वेयर नाइदर विल ट्रस्ट बुझला इट इज डिफिकल्ट टू नेगोशिएट वेयर नाइदर विल ट्रस्ट जेतो दीटा पार्टी अछंती तो दीटा पार्टी को भितर जड़े माने बा दी जन को तुम कौन ट्रस्ट करिया पड़िबो जदि नेगोशिएशन होबार अछि ओके एनीवे तो मीनिंग जानि दरकार नै हमर टोटल देखि दियो एटा गोटे क्लज है तो ये क्लज रो नाइदरटा तो सब्जेक्ट आकार यूज होती एक पार्टा कौन प्रेडिकेट तो पूर्वर इट पाखु आम नेगोशिएट पर्यंत यहाँ आउ गोटे क्लज तो तार सब्जेक्ट है इट इज है तुम कौन इज पाखु बाकी प्रेडिकेट तो दीटा क्लज को आम वेयर कंजंक्शन द्वारा कौन करचे कनेक्ट करचे जदि कंजंक्शन कनेक्ट करचे तो ये नाइदरटा कौन तुम सब्जेक्ट सब्जेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच समस्त जानते हैं आइदर यहाँ नाउन कि प्रोनाउन आकार यूज हुए तो देखी दियो ये नाउन प्रोनाउन देजी है तो ये आमर जदि यहाँ प्रोनाउन होता तार आर नाउन आम कौन माने लिखा दरकार जदि यहाँ प्रोनाउन किसी भाव यहाँ प्रोनाउन ताल आर नाउन कौन आर किसी नाउन बाहर कर कि आंसर हो नो तार यहाँ कौन ताल नाउन तो सेम क्वेश्चन पचारतु जदि मुझे नाउन कहूँ आर परवर्ती पार्ट रे आ परिवर्ते मु गोटे प्रोनाउन लगे पारि कि आंसर हो पे येस तो कौ प्रोनाउन लगे इट लगे है इट विल ट्रस्ट लिखिपारि बट प्रॉब्लम हम कौन नाइदरटा तार सब्जेक्ट बोली जना पड़ो ओके सो ये तुम कौन ताले नाउन चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को The little ones cried for joy. The little ones cried for joy. ये सेंटेंस रे हमर जो ones टा कौन सिंपल भाई लॉजिक ये देख क्राइड पाखु पर्यंत यहाँ हल तुम प्रेडिकेट तो यहाँ हल तुम कौन सब्जेक्ट यही सब्जेक्ट यहाँ कौन यहाँ हल तुम लास्ट वर्ड यहाँ हल तुम नाउन बुझेगा तो करेक्ट आंसर कौन हम नाउन अवश्य यहाँ प्लुरल नाउन तुम so that you also must remember. Question number 10. Some 30 chiefs were present. है देखो भाई यहाँ तुम प्रेडिकेट एक सब्जेक्ट ठीक अच्छे ये जो सब्जेक्ट रो प्रोनाउन क्लियर सम 30 chiefs oh I am sorry it is not a pronoun it is not at all a pronoun actually sentence का सब्जेक्ट कोड रहला 80 chiefs पाखे ओके तो पार्ट ऑफ स्पीच कौन आर नाउन तापर टोटल टा कौन तमरो एडजेक्टिव हमरो सॉरी नाउन फ्रेज टा सम 30 chiefs ता भितर ताले सम टा कौन हम कहबा एटा डिटरमिनर बा एडजेक्टिव कहबा ओके तो एडजेक्टिव ऑफ आंसर तमरो ना नाउन बा प्रोनाउन भूल कह देतली दैट वाज जस्ट द एरर क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अबोमिनेबल देखो अबोमिनेबल है तुम एडजेक्टिव कौन सी जिनस जोटा अबोमिनेबल तो सेटा है घृण्य योग्य है घृणा कर विषय वस्तु तेणु तार अपोजिट कौन हो प्रशंसनीय तो प्रशंसनीय भितर कौटा यहाँ एडमायरेबल क्लियर तो ये जो एवरेंट और रिपग्नांट ये दीटा कहले तुम सिनोनिम कार अबोमिनेबल तेणु आम जो अट्राक्शन टा नो डाउट गोटे पॉजिटिव वर्ड बट यहाँ प्रोब्लेम हो कौन ये कहीं नहीं पारानी कारण हेड वर्ड तुम अच्छे कौन एडजेक्टिव जब हेड वर्ड है एडजेक्टिव ताले जो वर्ड तुम चूज करिया सेटा मते एडजेक्टिव होवा दरकार ये जो अट्रैक्शन वर्ड है कौन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन तेणुटा कटि जो तो फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड आ गोटे वर्ड आसीगला तुमरो ऑब्जर्व ABSOLV ऑब्जर्व होची अगेन वर्ब हेड वर्ड ऑब्जर्व रो अर्थ होची जण को माने रॉन्ग डूइंग रूप करबा दोष मुक्त करबा हला गोटे लोक दोषी से ता वर्ड ता को दोष मुक्त करबा हला तो तार सिनोनिम होची क्लियर एक्विट एंड एक्सक्यूज हला तो तार अपोजिट कोन हेजो ब्लेम जण को दोषारोप करबा दोष मुक्त करबा हला तमरो ऑब्जर्व दोषारोप करबा हला ब्लेम Question number 13. Find the antonym of the given word acerbic. देखो पहले acerbic है तुम्हारा adjective head word again. acerbic का अर्थ होची very bitter बा severe है तो जदि कौन सी माने वस्तु सहित तार टेस्ट कथा यूज ता पाखरे यूज तो एटार मीनिंग कौन हो सिवियर है
आसर्बिक टोन आमे को आसर्बिक टोन होची ए टोन जोटा कि जो कौन थाए हार्शनेस थाए हला रूडनेस थाए बुझला गोटे लोक जतले आसर्बिक थाए टोन रे ता माने कोन से बहुत हार्श थाए रूड थाए तेणु जो आसर्बिक रो एटी एंटोनिम पचारची तो हार्श हला तमर तार कोन सिनोनिम पोस्टल एगुड़ा का तमर हबनी कटिजियो डायरेक्ट कौन पे हबनी देखो मीनिंग मु कहया को चाहूनी बिकॉज़ दैट विल यू नो इट अवे आवर टाइम सब पिला माने मते लेखि देबे जदी पारिबे ए जो ए आ बी काहे हबनी काहे की हबनी मीनिंग दरकार नै मोर सेटा मते लेखि देबे जदी पारिबे तो वर्ड हला नेगेटिव तो हमर जो आंसर आसीबो सेटा पॉजिटिव तो प्लीजिंग प्लीजिंग हला कोन और पॉजिटिव मीनिंग कैरिंग वर्ड आसर्बिक रो अपोजिट होजी प्लीजिंग हला नेक्स्ट 14 find the antonym of the given word acknowledge acknowledge परिवार अर्थ कोन बडे जिंस को माने परखी भलो भाव तक बुझी सुझी तक एक्सेप्ट करबा हला तेणु एंटोनिम रो माने यार एंटोनिम कोन हिजो रिजेक्ट कर देबा बुझला बा मना करिया कोन जिंस करिया पई बुझला तो देखो एक्नॉलेज रो अर्थ होची एक्सेप्ट करबा डिनाय रो अर्थ होची मना करिया हला बाकी एगुडा को सब अपन निजे कोन करिया चेष्टा करिया पई ये जो कंप्लायंट वर्ड अच्छी तो एटा एडजेक्टिव बहुत बढ़िया वर्डटा पॉजिटिव मीनिंग कैरी करे एति मुक्लु दउची बाकी बीएनटी बेंट और डिफीट समस्त को जणा तो बेंट हला बेंट रो पास्ट फॉर्म हला झुकी की रहइबा क्लियर तो सेटा को कहि देली बाकी कंप्लायंट रो मीनिंग समस्त देखि मते कहबे फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अडामंट गोटे अडामंट लोक हम का कहबा ये गोटे जितखोर लोक एक्जिदिया लोक हला जो माने कोन करंती जहा बुझिथिबे से लसड़ बंदा तो आर पचारती कोन एंटोनिम तो तार अर्थ कोन तो जो माने माने कोन फ्लेक्सिबल हला जो माने कंप्लायंट ए वर्ड टा कहउतले बे COLMPLINT एडजेक्टिव तो एबे हम कहि देल तार मीनिंग टा बाय डिफॉल्ट कंप्लायंट रो अर्थ होची गोटे लोक जे को ओबीडिएंट तो जहा कहबो से जरा करिवो हला अडामंट रो अर्थ कोन करिवोनी बुझला तो तार अपोजिट कोन आमिनेबल रो सिनोनिम होची ओबीडिएंट ए जो बोर्ड रे एबे लिखिली माने स्क्रीन रे कंप्लायंट ओबीडिएंट आमिनेबल ऑल दीज आर सिनोनिम्स ओके तो नेक्स्ट अराउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग माने बुले बके जोटा कहबा में ओडिया रे डायरेक्ट न कहि कि सेटा को हमें इंग्लिश रे कहू सर्कमलोकेशन क्लियर ए जो एलओसी देखछली एलओसी लोक एटा तमरो रूट वर्ड जार अर्थ होची कोन तमरो कोन एलओसी लोक समस्त मते कहबे एलओसी गोटे अछि एलओक्यू अछि हला तार अर्थ कोन आज ए रूट वर्ड समस्त मते मेंशन करबे राइट हला नेक्स्ट 17 one skilled in telling stories गोटे लोक जे कि टेलिंग स्टोरी माने स्टोरी टेलिंग रे मास्टरी बा पीएचडी करछ तब कहि परियो तो ताको हम कोन को रेकंटर दिस इज द मीनिंग राइट समस्त मन रखंतु एटा ला करेक्ट आंसर बाकी जो देछि वेंट्रल फैनेटिक टाइरो तार कोन मीनिंग इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू कैन डू इट so please do mention your answer in the comment box we'll definitely go through it and check giving only favors to one's kith and kin निजर आत्मीय स्वजन मानन को निजर परिवार वर्ग को निजर रिलेटिव मानन को कोन करिया पार्शियलिटी स्व करिया माने बायस देकी तांको कोन के तांको पई फेवर्स देखेबा हला तेनु तार अर्थ जहा तो ता पे हम गोटे वर्ड यूज करू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ कास्ट क्वेश्चन हम एक्सपेरिमेंट समझ सेटा लाइक नेपोटिज्म इज वेरी डेंजरस वर्ड इट कैरीज ए नेगेटिव मीनिंग सो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख दियंतु डू यू लाइक नेपोटिज्म और नॉट one who doesn't care for literature art तो ताको हम कोन को फिलिस्टाइन को समस्त मन रखिबे हला तो इनका लोक को हम कोन को फिलिस्टाइन
क्लियर डिटेक्टर प्रिमिटिव हिपोक्रेट सेगुड़ा कौन पे हबनी तार मीनिंग कौन कौन सीटा आपण माने जब चेष्टा करिवे करिया पे सो दैट विल बी ग्रेट 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 इफोर्ट सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर ए परसिव्ड इंजुरी देखो गोटे लोक तुमको कौन करछि हार्म करछि इंजुरी करछि तुम प्रति तुम कौन गोटे पार्ट को मन कर गोटे लोकर बॉडी पार्ट को से बाडी की इंजुरी कर दिछि बुझला तो ता पाई हम कौन करछे रिवेंज नबा को चेष्टा करछे तो सेटा को हम जदी करछे ताहले हमको आजो वेंजफुल we are going to take revenge अच्छा कौन है प्लीज हाँ 21 he dash his camera on the table he dash his camera on the table से कौन कला टेबल ऊपर तार कैमरा टा को रखि देला तो करेक्ट आंसर कौन हो देखि दियो एठी लाई लाई मु कहितली बोले तुमको LIED एटा हला मिछ हला LAYLAIN एटा तमर कोन तार अर्थ होची पड़ी रहिबा हला तापर आउटे वर्ड आसला LAY ले तो तार सेकंड फॉर्म होची लेड थर्ड फॉर्म होची लेड बुझला तो आर अर्थ कोन रखिबा हला रखिबा रखिला रखिला फॉर एग्जांपल तेणु हमर कोन आंसर ले हो क्लियर lie lay lane he lays camera on the table चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा को 22 my sister unlike my brothers dash to have a career in engineering देखो ये जो अनलाइक लिखा है जदि मोटी UN हटे देबी ता माने कोन हे जिवो ब्रदर्स माने भी चाहउछ इंजीनियरिंग करिया पे सिस्टर्स माने भी चाहउछ बट मु जदि एबे कोन करली लाइक आ सिस्टर भितरे लगे के लाइक से तो अनलाइक लगे देली तो तार अर्थ कोन हे जिवो ताका भलिया न है की जोटा फास्ट आस्तिबो ताका भलिया न है की ता माने मो सिस्टर रो इच्छा होची और ब्रदर्स मानकर इच्छा होची आ किछि तो सिस्टर मैं कौन चाहूँगी जे ब्रदर्स मान भाया न होगी से कौन कर इंजीनियरिंग रे कैरियर कर बुझला तेणु तुम ये सेंटेंसटा प्रेजेंट सिंपल रहिबो ब्रदर्स पाखे आम वांट लगेगा आई एम सॉरी सिस्टर को लेकिन आम कौन लगेगा वांट्स लगेगा तो ये प्रॉब्लम होची माने हमर कोथरे सॉल्व अप करिया पई सोल्व करला प्रॉब्लम होची ठीक है तो दैट विल टेक केयर ऑफ देखो द एयरलाइन वाज अनेबल टू गिव अस ए रीजन फॉर द डैश डिपार्चर डिले हला डिपार्चर डिले हेची तो एयरलाइन हम कोन करछथि एक्सप्लेनेशन दबारे असमर्थ रहिछथि हला आ ताकर से एक्सप्लेनेशन ता जेहेतु हमको मिलु नाही तो हम कौन कहवा ताकर एक्सप्लेनेशन इन एक्सप्लिकेबल अच्छी इन एक्सप्लिकेबल अर्थ होची हला जोटा कि तुमको एक्सप्लेन करा जाई परिबो नाही 24 to ensure a dash reply please include all pertinent details in your email हला जब तबे किछि गोटे माने शीघ्र रिप्लाई चाहूछो ताले कोन करो हमर जो ईमेल अछि त सेतरे सब जगह डॉक्यूमेंट्स दियो जोटा कि इंपोर्टेंट थबो एवं वैलिड थबो रिलेटेड माने रिलेटेड थबो ओके टू एंश्योर डैश रिप्लाई देखडी रिप्लाई ला नाउन एटा बसु एटा एडजेक्टिव बसु क्लियर तो प्रॉम्प्ट रिप्लाई में को प्रॉम्प्ट रिप्लाई अर्थ होची इमीडिएट रिप्लाई का बहुत कम समय भीतर जो रिप्लाई आपको मिल जाए क्लियर नेक्स्ट It asked the problem of air pollution in his speech. देखो ये जो वाटा देछि हला अवॉइड तो आर अर्थ होछि देखो कोन कहया गलो माने अवॉइड करिवा हला तेणु जण को कोन करिवा अवॉइड करिवा हला तो बाकी वर्ड जो देछि एडवर्ट तो यू ए डी वी ई आर टी ए डी
This is in fact the correct answer to this question. It asked the problem of air pollution in speech. तार अर्थ होची जेतल से स्पीच दोतले तो स्पीच मधरे से एयर पोल्यूशन टॉपिक तक मध्य कोन ता ऊपर गुरुत्वारोप करथिले बा ता ऊपर किछि डिस्कशन करूथिले हला तेणु एटा हला मीनिंग एठी जो लोकटी ही से कोन करचंती से एडवर्ट करचंती ना कि एडवर्ट ओके एडवर्ट हमने इनडायरेक्टली मेंशन करचंती काहू एयर पोल्यूशन को ता स्पीच रे इनडायरेक्टली नो डायरेक्टली एयर पोल्यूशन विषय से कथा होचंती हम कहि परिबे चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को 26 चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग बुझला चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग कैसे करबा ए सेंटेंस रे तमरो ए टू ए पर्यंत एटाला कोन तमरो ऑब्जेक्ट हैला कार ऑब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन ना कोन दाले एटाला सब्जेक्ट तो एटी जे जो प्लेइंग सहित जो फ्रेजटा होछि ऑल डे लॉन्ग एटा हम जतो पैसिव करबा सेटा मध्ये सेठी रहबा दरकार राइट ये जो प्लेइंग के आसी तमर कोन हे जिवो और सब्जेक्ट हबो ऑब्जेक्ट अछि तो लाइकिंग देखो एटी अछि कटि गेला प्लेइंग हला बी ऑप्शन नंबर बी एटा तमर करेक्ट आंसर हबो प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग इज लाइक्ड बाय चिल्ड्रन ए सीरीज का देखो प्रेजेंट सिंपल अछि प्रेजेंट सिंपल रो इज मार्क प्लस विथ लगै के हम करिया पैसिव करिया हला जेहेतु प्लेइंग हला तमर हमर कोन पिले अनकाउंटेबल नाउन जेरॉन हला तो सेही ये रे हम को गले इज लगै 27 once a month we visit the temple आसु थरे आमे कोन करू टेंपल को विजिट करू तो अबे देखि दियो एटा तमर फ्रेज ता दिस इज अ फ्रेज सब्जेक्ट आरंभ होला तमर कोन वी पकरू एनएलआईटी एडाला सब्जेक्ट बाकी एडाला प्रेडिकेट हैला एनएस सब्जेक्ट से तब भाव बेस फॉर्म बसछि तो एडाला तमर प्रेजेंट सिंपल अछि तने जदी आमे कोन करिवा एटा को कन्वर्ट करिवा डिक्लेरेटिव सेंस टा ताले जो हमर के द टेंपल जोडा देछि द टेंपल ला तो एक्चुअली कोन ऑब्जेक्ट कार विजिट रो तने हम कोन करिवा सेटो गाडी की माने कोन करिया पले सब्जेक्ट कर दवा देखो द टेंपल कोटी आरंभ होइछि कि आरंभ होइनी हैला इट इज कॉल्ड विजिटिंग द टेंपल इज डन बाय अस वंस ए मंथ तो एठी हमर विजिटिंग हबनी आईएनजी फॉर्म रहइबनी एटा हमर कोन मेन वर्ब एटा तमर थर्ड फॉर्म रहइबो हैला थर्ड फॉर्म देखो विजिटेड कोटी अछि वी आवरसेल्फ विजिटेड एटा सेकंड फॉर्म कारण सब्जेक्ट परे बसछि कटि गेला एटा और सी once a month the temple is visited by us एई बार एटा रखो monthly there is a visit by us to the temple so there is a visit देछि तो एटा प्रेजेंट सिंपल रे अछि अगेन ए जो सेंस ता प्रेजेंट सिंपल रे अछि तेनो कोन बेटा कटि जो ओके so I hope all of you are understanding quite clearly what is being taught to you so in the class and you have learned all the concepts that have been taught to you so far if that is the case please do mention in the comment box I could not find the book recorded एटा subject modal adverb main verb object बुझला सेरेस्टा कोन हे गेला सब्जेक्ट परे verb आछि माने एटा डिक्लेरेटिव क्लियर एटा तमरो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैला अच्छा तो एटा को हम को करिया पैसिव तो करिवा द बुक ता आसी कोन हबो ऑब्जेक्ट चला सब्जेक्ट हे जिवो द बुक कुड नॉट बी फाउंड बाय मी एटा आंसर बाकी उडा को नीचे चेक कर दियंतु कटि जो आराम नेक्स्ट has somebody broken the gate had somebody broken the gate एटा इंटरोगेटिव रे अछि ताको हम करे रे अछि पैसिव तो पैसिव करिया समस्त मन रखो जो एक्टिव इंटरोगेटिव अछि पैसिव ता कंपलसरी इंटरोगेटिव रहइबो तो सेंटेंस रे एटाला सब्जेक्ट एटाला हेल्पिंग वर्ब एटाला मेन वर्ब तो जो द गेट अछि एटा तर ऑब्जेक्ट जोटा कि सिंगुलर मनला एटा तमरो हैज हैव सहित वर्ब रो बीन प्लस बी फॉर्म लागि ओके तो एबे देखि दियो एटा तमरो ब्रोकन ता हला थर्ड फॉर्म हला द गेट हला तार कोन माने ये ऑब्जेक्ट एटा माने हम सब्जेक्ट जो करबा ताले एटा सब्जेक्ट एटा मध्ये इंटरोगेटिव रहइबो देखो द गेट तापर द गेट पूरा और कोन दरकार हेल्पिंग वर्ब दरकार देखो हाफ ता तमरे माने द गेट पाके हाफ लागि परिबन फर्स्ट कथा कटि गेला सेंटेंस ता प्रेजेंट रे अछि तटे हार्ड लागि परिबन एटा भी कटि गेला
तापर CD भितर has the gate been broken by somebody हे पारे has been the gate broken एटा भूल अछि राउंड हला काहे कि कारण तो जदि तीनटा सेंटेंस से गोटे सेंटेंस तीनटा लागि लागि वर्ब थाए तो जेतरा हम इंटरोगेटिव करिवा फर्स्ट वर्ब ता ही सब्जेक्ट पर गुरुची सब्जेक्ट पूर्व केवल फर्स्ट वर्ब ही लागि मनला देखो एटा सब्जेक्ट ता पूर्व लागि छी फर्स्ट वर्ब 29 क्वेश्चन क्लियर 30 I begin my day with a cup of coffee हला तो एटा मध्ये से पचार छि मध्ये पैसिव करिया पई इफ आई एम नॉट रॉन्ग देखो एटी सब्जेक्ट हला आई begin हला ट्रांजिटिव वर्ब तो तार ऑब्जेक्ट की माय डे क्लियर तापरे with a cup of coffee एटा लडे प्रीपोजिशनल फ्रेज सिंपल तेणु एटी हमर आई बिगिन देछि माय डे तो माय डे पाखे कोन लागिवो इज हमर प्लस v3 भितरु इज लागिवो तापरे कोन लागिवो वर्ब रो थर्ड फॉर्म लागिवो देखो एटी माय डे इज बिगन हला ए कप ऑफ कॉफी हैज बिगन देछि कप ऑफ कॉफी इज बिगन देछि माय डे इज बीइंग बिगन देछि पटि जीवो तो करेक्ट आंसर कोठा हला ए Now, question number 31. Liz doesn't usually wear jewelry, but yesterday she was wearing dash. तो ये हमारा आसीगला का ऊपर आर्टिकल ऊपर तो नेकलेस रा देखि दियो फर्स्ट लेटर रा साउंड कोन कॉन्सोनेंट तो हम एट कोन लगेबा ए लगेबा wearing a necklace. Suzy got dash part-time job in dash 8 lane restaurant. एका बेले सुजी कोन कला गोटे पार्ट टाइम जॉब पाइला हला एनी पार्ट टाइम जॉब ए जो सेंस आस्पेटी एनी पार्ट टाइम जॉब भितर कोन से गोटे पाइला आ जेतोल सेंटेंस रे एनी सेंस आसे तो सेठी हमें को करबा ब्लैंक रो परवर्ती वर्ड रो फर्स्ट लेटर को देखिबा तार साउंड कोन एटी साउंड कोन आछ प साउंड आछ पार्ट टाइम रे प हला कोन तो कॉन्सोनेंट लेटर कॉन्सोनेंट पाई एटी कोन लगे देबा ए लगे देबा बुझिले तो आंसर बाहर गेला हमर ऑलरेडी एटा हला आंसर ऑप्शन नंबर सी 32 over which sound actually 33 we went to dash seaside and played on the beach we went to dash seaside and played on the beach देखो एटी बेले ए जो seaside सी रो गोटे साइड ये सर तो seaside जदि हम कहू सी रो गोटे साइड तो ऑब्वियसली एटा बाय डिफॉल्ट कोन मेंशन हे गेला पर्टिकुलर हे गेला त कोन लागियो द लागियो we went to the seaside and played on the beach okay next the more stops in a flight the more dangerous it will be flights रे जते कोन स्टॉप्स रे सेते कोन हो एटा डेंजरस हे जीवो तो एकड़ देखो 10 सहित कंपैरेटिव डिग्री बसची तो एकड़ मध्ये 10 सहित कंपैरेटिव डिग्री लागबो तो एटा बी लगे देबो हला so we are left with four more questions sorry 6 more questions yes teachers of the school are very liberal and intelligent ए स्कूल रे जो टीचर्स मान अछंती से माने कोन बोले बहुत लिबरल अछंती एवं इंटेलिजेंट मध्ये अछंती हला लिबरल इन द सेंस lenient consider तुम कर करियो यस टीचर्स तो ए जो स्कूल रो जो टीचर माने तो पर्टिकुलर हे गेले यदि पर्टिकुलर हे गेले ताले कोन लगेगा द लगेला हला जदि कोन से गोटे स्कूल रो टीचर माने को होता कोचे किबा गोटे टीचर कथा कोच तो से जो टीचर हो किबा गोटे मोर देन वन टीचर होंदु तो सेटा डेफिनेट हे गेला कि स्पेसिफिक हे गेला कि कॉन्टेक्स्ट रे ताले कोन लागियो द लागियो 35 36 हमर आछि बोधे इफ आई एम नॉट रॉन्ग डायरेक्ट इंडायरेक्ट राइट you said to me I warn you of the coming danger देखो also reporting verb reported speech एडाला ऑब्जेक्ट एडाला सब्जेक्ट एड से तो जे ऑब्जेक्ट थिबो ताले कोन लागिवो एटा टोल्ड हे जिवो हला तापरे आई वार्न यू आई डाला सबर ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तो एटा चेंज हो का अनुसार सब्जेक्ट अनुसार बुझिला तापरे यू हला सेकंड पर्सन तो एटा चेंज हो ऑब्जेक्ट अनुसार
जदि थर्ड पर्सन था ताले चेंज हे नथांता जेला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट अछि एटा प्रेजेंट सिंपल अछि एटा पास्ट सिंपल हबो तो पास्ट सिंपल देखि दे कोडी अछि यू वांट मी हैला यू सेड टू मी आई वांट यू ऑफ द कमिंग डेंजर बुझला तो एटा कोन हो ताले यू वांट हिम ऑफ द कमिंग डेंजर हैला हबनी कारण एठी हमर ऑब्जेक्ट किए मी एटा कटि गला यू टोल्ड मी ऑफ द कमिंग डेंजर ए पारे यू एडवाइज्ड मी ऑफ द कमिंग डेंजर हैला यू वांट मी देखो एटी टोल्ड हबनी कि एडवाइज हबनी कारण एटी हमर वांट अछि आई वांट यू वांट मी ऑफ द कमिंग डेंजर एटा करेक्ट आंसर so let us go to the next 4 questions quickly. He said to his friend, please lend me your book. बुझले he said repeating verb past अछि तो एटा तमरो adverb सहित आरंभ होई गोटे imperative sentence एटा ला main verb एटा ला तार कोन object हैला चलो तले कोन हबो he said to his friend please lend me hello dear students, hope you all are doing well. RI रो मेंस एग्जाम पे आपन प्रिपरेशन बहुत सुंदर भाव चलते हो आशा करछि तो आज यूजुअल सब दिन भली चलंत डिस्कशन करिया किछि हमर क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आज भी अछि मिक्स टेक अछि सब पार्ट रो ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स तो जो गुडा को तमत आसीबो त सब बेले आपन मन जेमति कनेक्टेड रहउचंती क्लास देखुचंती ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स दउचंती ओके तो सेही जिंस आपन मन को एक्सपेक्टेड रहिछि तो यही एक्सपेक्टेशन जब पूरा करि पारले ताले आपनकर परीक्षा रे जो आगामी दिन गुड जो एग्जाम सब हबार अछि तो सेतरे सबुतरे आपनकर रिजल्ट बहुत भलो ओके सो लेट अस स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले क्वेश्चन नंबर 1 ता अछि हमर कहा ऊपर एरर डिटेक्शन ऊपर हला ए सेरेस्टा देखचंती एतरे सब्जेक्ट के आई बाकी पार्ट टोटल ए टू पर्यंत एटा हमर प्रेडिकेट तो सेंटेंस रे ई जो इंसिस्टेड देछि इंसिस्टेड हला इंसिस्ट पर सब कोन बसे ऑन बसे एटा मन रखिबे हला तो ये जो ऑन पर जो बसची ही इज गोइंग हला तो ही इज ताला डिटरमिनर गोइंग होची इट कोन जेरंड तो एटा हम ट्रीट करिया कोन नाउन तो डिटरमिनर प्लस नाउन फ्रेज ता तमर एटी कोन भाबरे यूज होची ऑब्जेक्ट भाबरे यूज होची तार ए ऑन प्रीपोजिशन रो सब पिला माने बुझी पाइले मते ठीक लिखि देबे जे ही इज गोइंग ता कोन हला तो ही इज गोइंग ता होची ऑब्जेक्ट कार ऑन रो दे आर हला एडवर्ब ऑफ प्लेस इमीडिएटली हला एडवर्ब ऑफ मैनर क्लियर the sentence रे किछि भी एरर नाही the sentence is absolutely flawless it is an impeccable sentence okay so it is an impeccable sentence तर किछि अदरे एरर नाही चलो जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन grapes cannot gathered from thistles तो सब पिला मन को कहि रखुछि जो thistles लिखा है जे thistles अर्थ हो जे कंटा गछ हला कंटा गछ जोथरे हमर खास करी गोटे एमतिया गछ जो जार फूल गुडा को पर्पल कलर रो आ तार जो पत्र रे माने कंटा टाइप रो एमति पॉइंटेड सब हैला हाय और माने पत्रटा थिसिलटा नेट रे मारतले जानि परबो ओके तो एटी कहि जे ग्रेप्स को हमें थिसिल्स को केबे ऑप्टेन करि परिबन राइट तो ए जो देखि दियो एटी कैनड पर हमर वर्ब रो थर्ड फॉर्म देछि मन रखो तो कैन हो किबा कुड हो मे माइट व्हाटएवर कोनोसी गोटे मॉडल पर हम सब बेले बेस फॉर्म लगेबा सेंटेंस भले मन रखियो सेंटेंस एक्टिव वॉइस रे थाउ किबा पैसिव वॉइस रे थाउ सब बेले मॉडल बसछि माने मॉडल्स अछि माने तापर कोन बसियो बेस फॉर्म बसियो तो बेस फॉर्म डाटी कोन बसियो ताले एठी जेहेतु सेनेस्टा पैसिव स्ट्रक्चर अछि ताले हम एठी बी रो फॉर्म लगेबा हैला ए निजे बी टा ही बसियो तो केम लिखिबा ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम thistles ओके आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इज पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस contains an error so now let us go to the next question question number 3 answer should be नो एरर अगेन देखा पिले ए सेंटेंस रे तमरो अछि दीटा क्लॉज तो एटा ला ए टू ए पर्यंत गोटे क्लॉज ए टू ए पर्यंत गोटे क्लॉज हला तो दीटा जन क्लॉज को हम व्हेन कंजंक्शन द्वारा कनेक्ट कले जोटा कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बुझिला तो सेंटेंस ता फर्स्ट क्लॉज रे सिंपल पास्ट अछि एटा ला सब्जेक्ट एटा ला वर्ब आ हमरो सेकंड क्लॉज ता पास्ट कंटीन्यूअस रे अछि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्लियर तो एठी हमको ध्यान देबार एति अछि जे दीटा जन क्लॉज रे टाइम हैला पास्ट एठी तमरो सेकंड फॉर्म देछि एठी तमरो कोन अगेन हमरो हेल्पिंग वर्ब का पास्ट अछि तो जब भी हमरो पास्ट टाइम रे दुईटा एक्शन हैला विषय रे हम आलोचना करे जाउचे तो जोथरे गोटे शॉर्ट एक्शन अछि आ गोटे कोन अछि लॉन्ग एक्शन अछि तो सबले मन रखिबे
शॉर्ट अक्षर को सिंपल पास्ट लिखा, लॉन्ग अक्षर को पास्ट कंटिन्यूअस लिखा, बुझला। तो ये कहूँ चाहूँगी जो गोटे लोक बास्केटबॉल खेलुला है, तो यहाँ लॉन्ग अक्षर सेकेंड क्लॉजटा, तो फास्ट क्लॉज कौन देती शॉर्ट अक्षर, तो कौन है से समय से तार आंकलटा को कौन कला स्प्रेन करदेला। ओके, तो गोटे मनकर जगह गोटे लोक पड़गला इंजुरी होगा, तो यहाँ शॉर्ट अक्षर इमिडिएटली इंजुरी हो जाए, तो इंजुरी होगा तो 2-4 दिन कि 2-4 मास लगे। ओके, so I hope you got it right. So now let us go to question number 4. Each person hold it in trust from God to promote the goods of mankind. देखो ये ए सेंटेंस रे एटाला सब्जेक्ट हैला, तो एठू हमर टोटली बाकी पार्ट एटाला प्रेडिकेट। तो ए सेंटेंसटा देखि दियो, ईच पर्सन रे एटा गोटे एक्चुअली कोन पर्सनटा कोन नाउन, नाउनटा एंड एट द सेम टाइम सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन सब कौन हुए सिंगुलर वर्ब निये है। तो सेंटेंसटा एक्चुअली प्रेजेंट सिंपल टेंस रे लिखा है, बुझला। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस रे तमर पर्सन जेहेतु है तमर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो एटा को हम कौन करबा होल्ड रे एस लगेबा हैला। होल्ड है तमर वर्ब, तो वर्ब रे हमें कंपलसरी एस किंबा ईएस फॉर्म लगेबा। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सब पिला माने रेगुलरली क्लास देखंतु, तो जो माने क्लास देखुचंती तो डेफिनेटली तार मजा तो पाइबो समस्ते, क्लास न देखले मते मजा पाइबो, बुझेला। तेनु क्लास रेगुलरली सब देखो। इट इज डिफिकल्ट टू लेट गो ऑफ बैड मेमोरीज हैला। एक्चुअली सेटेस मीनिंग कोन कहउछि चाहूछि जे जदि हमर कोनोसी गोटे खराब स्मृति अछि हैला, गोटे बेटर एक्सपीरियंस अछि, तो से जो बेटर एक्सपीरियंस टा को यूजुअली हैला गेट रीड करबा आउ बहुत शीघ्र आमे सेटा को हम माइंड रु भूले देबाटा बहुत कष्ट। दैट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो जो जगह रे हमर मेमोरीज हबनी, ए जो मेमोरीज अर्थ कोन जानछ जोटा एठी देछि, तो मेमोरीज अर्थ होछि फॉर एग्जांपल जदि आपण माने निज निज लाइफ को नै की बा एक्सपीरियंस को नै की किछि कोन लिखिबे, गोटे बही लिखिबे कि कोन स्कूल राइटिंग लिखिबे, तो सेटा को हम कोन कहबा मेमोरीज। निजर लाइफ रे एक्सपीरियंस को नै की निज लाइफ ऊपर किछि लिखिबा हैला। एठी सेमति किछि कॉन्टेक्स्ट दिया हैनी, तो एठी जो वर्ड टा बसिबो सेटा कोन बसिबो, इंस्टेड ऑफ मेमोरीज वी शुड यूज मेमोरी हैला। ठीक है बोले। तो इफ यू अंडरस्टूड, let us now move on to the next question, question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 रे हम आलोचना करूचे वैल्यू विषय रे, जोटा कि तमर सब्जेक्ट हैला। तो एठी ए पर्यंत एटा तमर प्रेडिकेट टा इज सहित वर्ब रे थर्ड फॉर्म देछि, तमर एटा हमर प्रेजेंट सिंपल पैसिव फॉर्म रे अछि। तो सेंटेंस अर्थ होछि द वैल्यू इज नोन हैला। तो वैल्यू इज नोन एक्चुअली जो पैसिव फॉर्म रे मु कहली पैसिव फॉर्म नो, एटा होछि एक्चुअली तमर कोन नोन टा वर्ब रो थर्ड फॉर्म नै एठी, एटा ऑब्वियसली वर्ब रो थर्ड फॉर्म, बट फंक्शन करछि कोन भाबरे एडजेक्टिव भाबरे मनला। तो जेते बळे वर्ब रो थर्ड फॉर्म टा वर्ब भाबरे फंक्शन करे, तो से जो माने सेही वाला स्ट्रक्चर को हम कोन को पैसिव, क्लियर हैला। ऑब्वियसली ता पूर्व कोन थिया दरकार, तमरो बी वर्ब थिया दरकार, बट जेता वर्ब रो थर्ड फॉर्म टा तमरो वर्ब भलिया फंक्शन न करे कि एडजेक्टिव भलिया फंक्शन करे, एवं सेंटेंस से थिबा नाउन किबा प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे बा मॉडिफाई करे, किबा ता विषय हमको किछि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए, तो सेटा को हम कोन को एडजेक्टिव को, राइट। तो ए जो नोन टा हैला, तो एटा हला एक्चुअली वैल्यू रो डिस्क्रिप्शन, बुझला। तो वैल्यू टा को माने वैल्यू टा जणा सुना कोन पई, फॉर इट्स डैश ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, समस्त मन रखिबे। तो ए जो जगह रे हमर कोन दरकार एडजेक्टिव दरकार, जोटा कि ए नाउन को मॉडिफाई करिवो ग्रोथ को। तो देखि दियो ए जोटा लग्जरी देछि, तो एटा नाउन टा कटि गला, लग्जरियसली एटा एडवर्ब टा कटि गला, एबे रहला ओयूएस एडजेक्टिव एएनटी एडजेक्टिव मनला। तो लग्जरियस जेतला एडजेक्टिव भाबरे यूज हे, तो तार अर्थ होछि कोजी कंफर्टेबल, बुझे लागि जेमति कि एवरीबॉडी वांट्स टू लिव ए लग्जरियस लाइफ, क्लियर। बट ए जो वर्ड आपण देखुचंती एटा तमरो लॉस ग्रीन ग्रीनरी पाखरे यूज हे। फॉर एग्जांपल गोटे जगह रे माने कोन हेछि, बहुत गोटे तमरो गछ लता लागि कि रहिछि हैला, पूरा वेजिटेशन माने चारिया डे भरी हेकि रहिछि गछ लता, तो सेटा को हम कोन कहबा लग्जरिएंट कहबा मनला। तो द करेक्ट आंसर इज लग्जरिएंट। 7 नंबर क्वेश्चन को चलो जिबा, द आर्चर मिस्ड द डैश बाय एन इंच। आर्चर रो मीनिंग समस्त जानि चंती, जो माने आर्चरी करंती, से माने कोन करंती गोटे लक्ष्य साधन करिया चेष्टा करंती एवं सक्सेसफुल पथि होबा पे चेष्टा करंती, बुझिबाइले। तो सेंटेंस से नाउन फ्रेज ताला सब्जेक्ट, बाकी पार्ट हला तमर कोन प्रेडिकेट, मिस्ड ला वर्ब रो सेकंड फॉर्म, एट द सेम टाइम इट ट्रांजिटिव वर्ब,
एंड तार ऑब्जेक्ट देछि एटु पर्यंत बुझला तेणु एठी हम कोन लगेबा ताले एम हबो आंसर बुझला आंसर माने कोन करंती एम गोटे पर्टिकुलर एवला गोटे एम को टारगेट करंती राइट तो sentence meaning I don't think it is required to explain to you. So let us move on to the next question. Question number 7 परे question number 8 को हम तो आछे तो हम देखुचे जे अगेन सही हमर गोटे फिलर ऊपर ए क्वेश्चन मध्ये कोन देछि बेस्ट देछि अछि राइट देखि दियौ सेंटेंस रे हमें यू रो आरंभ करछे यू शुड डैश द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स एटा क्लॉज अछि गोटे हला एटा आ गोटे हला तमर कोन एटा बुझला फर्स्ट क्लॉज सब्जेक्ट एटा हेल्पिंग वर्ब ए जो जगह हम दरकार मेन वर्ब ए जो मेन वर्ब टाइट बसिबा एंड अगेन एट द सेम टाइम एटा ट्रांजिटिव वर्ब हेतबो तार ऑब्जेक्ट हे जो कि द अपॉर्चुनिटी हला तो से कहू चाहूची जे जतबेले हम पाखु अपॉर्चुनिटी आसे आमे सेटा को ग्रैब करिया उची हला दीटा जगह हाथ दरे कोन करिया दरकार ताको सीज करिया उची बा ग्रैब करिया उची तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ACIJD तो जेडी सीज रो अर्थ होची ग्रैब करिया हला हमें ताको हाथरू छाड़ीबा हमें छाड़ी देबाटा उचित नो दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस सो क्वेश्चन नंबर 9 we must dash ourselves to changing circumstances हैला तो एठी मु समस्त को कहि रखुची तो एठी जो वर्ड देखुचंदी लिखा आछि गोटे वर्ड हला अडॉप्ट गोटे लिखि दोची आपण मनकर क्लैरिटी पाई बुझिया पाई सुविधा हबो आ गोटे हला अडॉप्ट ADAPT आ गोटे हला ADEPT अडॉप्ट तो प्राय क्लास रे वो जो क्वेश्चन सब आर ऊपर बेस्ड है कि ये तीनटा जगह होकाप सब रास्ता है वो सब बड़े प्राय पिला को क्लैरिटी दिए तो दैट इज माय ड्यूटी टू डू द सेम इन टुडेस क्लास एज वेल तो देखि दियो अडॉप्ट ला वर्ब एटा मध्ये वर्ब बट लास्ट वर्ड ता जोडा देछि सेटा होछि एडजेक्टिव तो मन रखियार सब थारु इजी वे होछि हला OPT APT EPT तो EPT रे जोडा एंड होतो सेटा ला एडजेक्टिव बुझिला तो मोर और लेस से तीनटा जंकर मीनिंग होछि पॉजिटिव क्लियर ए जो अडॉप्ट रो अर्थ होछि टू एक्सेप्ट करबा बुझिला एक्सेप्ट करबा टू एक्सेप्ट अ चाइल्ड और ए गर्ल और ए बॉय ओके अंडरस्टूड तो आई जो आटा देछि अडॉप्ट एटा हम पढिबा अडॉप्ट ऑप्ट एप्ट एप्ट हला तो अडॉप्ट परे सब बेले कोन बसे टू बसे बुझिला अडॉप्ट टू समथिंग फॉर एग्जांपल यदि कहबी अडॉप्ट टू ए न्यू प्लेस अडॉप्ट टू ए न्यू प्लेस तो तार अर्थ है जीवो गोटे नुआ जगह सहित खाप खुआई कि चलवा ता सहित एडजस्ट करवा बुझला तो सेंटेंस रे एक्चुअली कोन बसिबो अडॉप्ट ही बसिबो इवन सेकंड जो ऑप्शन ऑफ दे लिखि छेटी हला तो वी मस्ट अडॉप्ट आवरसेल्व्स टू देखा टू बसची बुझला अडॉप्ट परे हमर कोन बसची रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बसची ओके तो ता परे हम टू बसची टू परे समथिंग जो देछि सेटा हला चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस बोलला तो सेंटेंस रो अर्थ होछि जतबेले आमर पारिपार्श्विक परिस्थिति चेंज हो जाए तो आमको सही माने अनुसार निजको मध्य कोन करियार अछि चेंज करिवार आवश्यकता रहिछि बुझला तो मु एटा कहि देली आपन मानको एटा मध्य कहि देली तो बाकी आसंत जीवा थर्ड को अडॉप्ट एटा ला एडजेक्टिव एंड इट कैरीज ए वेरी पॉजिटिव मीनिंग आर अर्थ होछि स्किलफुल इफ यू आर अडॉप्ट यू आर वेरी मच स्किलफुल हला और मु तो कहि परिबे डेप्थ DEFT बुझला और एडroit so these are a few synonyms you must pay attention to okay तो आसीबार एग्जाम से समस्त मन रखंतु तो चलो जीवा क्वेश्चन नंबर 10 को द हकर्स कथा एड कहिछि द हकर्स आर सेलिंग देयर डैश इन द स्ट्रीट्स मनला हकर्स माने हम का को जोवन सब रास्ता कड़ रे बा कोन करथि बिजनेस करथि छोट छोट प्रोडक्ट्स को आनी हला तो करेक्ट आंसर बेटा the hawkers are selling their wares in the streets बुझला तो रास्ता साइड रे हो रास्ता रे हो बा गली रे हो व्हाटएवर सेवन ताको जो छोट छोट प्रोडक्ट गुडी तो केडी आनछथि तो से गुडी को करंती बिक्री करू अछंती सेंटेंस रो एटाला सब्जेक्ट एटाला प्रेडिकेट तो दीटा क्लॉज नै गोटे ही क्लॉज अछि तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रे अछि जदी बाकी किछि डाउट्स अछि तो पचारिबो तो सेलिंग हला तो ट्रांजिटिव वर्ब तो तार ऑब्जेक्ट हे जिवो एटा बुझला तो they are wares तो they are tala determiner wares hela noun बाकी in the streets रे in हला तोर preposition the streets हला तार ऑब्जेक्ट सेंटेंस से मोटो पर दीटा ऑब्जेक्ट अछि तो गोटे लाई सेलिंग वर्ब ऑब्जेक्ट आ गोटे हला in preposition रे ऑब्जेक्ट ओके तो जो माने मेंस पे प्रिपेयर करचंती मेक श्योर सब क्वेश्चन लॉजिक पूरा हला at your fingertips it must be there right
So spelling ऊपर देछि एठी देखि दियो एटा तमर कोन देछि gestalt एटा G S T A L T हबो I am not going into the meaning okay तो G S T A L T correctly spelled से पचाछि तो एटा कोन अछि रंग अछि imbroglio एटा I M B R O G L I O imbroglio बुझला imbroglio रो अर्थ होछि अति extremely bad ou unpleasant or embarrassing situation clear as I said let us not get into the spelling part of it. So this should be impasse hela it not a e and then recondite. So this is the correct spelling recondite recondite is an adjective okay सब पिला माने मते यार अर्थ लिखि कि देबे जे आपण माने कोन बुझिले यार अर्थ कोन recondite को context यूज हुए if possible try to form a sentence using this word everything counts every small drop counts okay so if you give your best effort then you are going to get or you are going to reap the benefits as well. एटी मध्ये करेक्ट स्पेलिंग हमको देखेर अछि त देखि दियो HINDRANC hindrance हला तो नाउन एटा करेक्ट अछि हला करेस्पोंडेंस रे डबल आर एठी होबा कथा तेटा भूल अछि इंश्योरेंस नो एटा इंश्योरेंस एठी भूल अछि सेमति एश्योरेंस नो एटा होछि एश्योरेंस करेक्ट आंसर कोडा हेला हमरो ए. So now let us go to the next question. Question number 13. Find the correctly spelled word. Right? देखो एट बिले rogue R O G U E हला तो जो वर्ड देछि हमरो find the correctly spelled word R O G U जगह रे R O G U E हबो rogue रो मीनिंग कोन समस्त मत लिखि देबे ओके नॉट लाइक क्लास में कह देबी स्पेलिंग ठीक अछि C O L L E A G U E right so this should be the answer and this is deluge D L U G and this is our allege A double L E G ओके तो करेक्ट स्पेलिंग कह देली रॉन्ग स्पेलिंग जोडा थिला तार भी करेक्ट वर्जन कह देली आशा करछि सब माने जो सब आपन मान को सीरियस अछन जोटा कि मु भाबुछि आपन समस्त थिबे डेफिनेटली बे सब पिला माने ए जो जिंस को को करियो ध्यान से सुनिबे कौन सी गोटे ऑप्शन जोटा आंसर ता ऊपर फोकस खाली रखियोनी बाकी ऑप्शन गुडी को कोन पे हबनी लॉजिक कोन जदि स्पेलिंग ऊपर देछि ताले से गुडी कर करेक्ट स्पेलिंग कोन तो देखो एटी चारटा स्पेलिंग सिखि कुछ देखली क्वेश्चन हम सिखो क्वेश्चन इज टीचिंग अस हला ऊपर क्वेश्चन आस्पर ऊपर गुडी आस्पर ऊपर पे आस्पर हला so let us stay prepared solid way जेमति हमरो इंडिया प्रिपेयर्ड थिला हमरो पाकिस्तान को कोन करिया पई आने चखिया पई तो सेमति हमें मध्ये प्रिपेयर रहबा दरकार ओके सिंपल फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगेन हमको एठी कोन करिया अछि स्पेलिंग करेक्ट जोडा अछि ताकू बाछिया अछि एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स disconcerting CONCERTING so this should be the answer okay बुझले so dear students let us go to the next question number 15 you all are unique you all expect and you all deserve the best service in the world and the best job thereafter stay corrected watch all the classes without fail right be positive so exhilarate 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 is a verb बुझबाइले तो तार अर्थ हो कोन करिया to make someone happy or to make oneself happy as well okay ठीक है ना पहले so 15 is done we are left with 25 more questions so as usual we will try to discuss all those questions in detail right so pay attention to whatever I am telling you and try to write down the nitty-gritty of it 16 one who cannot be corrected so now here we are in the one word substitution section OWS section रे सब बेले मन रखिबे तो बहुत गुडे difficult words भी आसे सब जगह almost all the options will contain difficult words which most of you are unaware of and that is purely because of the lack of reading skills so I strongly urge every aspirant to improve the reading skill as quickly as possible right see so one who cannot be corrected गोटे लोक जहा को करेक्ट करि परिबानी तो ताको हम कहबा इनकरेजिबल so baki options I am leaving them on to you it is your responsibility and duty okay take them as a challenge and to take them what I should say seriously and try to write down the meanings and if possible post it in the comment box I shall go through all your answers okay once I am done with the video
16 is done. So now let us shift gear to the next question, that is 17. And here this is a very wonderful question as well. Most expected questions like this, okay, you are going to encounter in your upcoming exams. So stay prepared. A child who stays away from school without permission. So you must have seen various childs. There are a lot of children, sorry, various children. Okay, तो जो मैंने कौन करते क्लास को bunk करते तो यही पिला मन का कौन को front को. A child who stays away from school without permission. So without taking the permission of anybody, they prefer to bunk the classes, and so do their friends. Okay, so this is called front. Here, I think this is not TRUA, it should be TRAUNT. There is a slight spelling error, it seems here. Okay. A group of 3 powerful people. So I'm just going to tell you the option which is the correct answer, and you should try to check the remaining words and their meanings. And if you do not know any of those meanings, or for that matter that word, then just write them down and try to revise them on a daily basis. That is going to help you out in the exam as well. Okay, that will act as a moral booster. See, triumvirate is the correct answer. Triumvirate, right? A group of 3 people, okay, who are very, very powerful. And as you can see, tri, this TRI, these 3 letters are there in all the words, but this is the correct answer. So we are left with approximately 20 to 21 questions. We are halfway through in that way. Okay, a political leader appealing to popular desires and prejudices of ordinary people, and such a person is called demagogue, right? And this, this is such a word which was almost asked in all competitive exams. So beware of it. Enclosed in a small closed space. So this is another beautiful one-word substitution, and here is the answer. Okay, enclosed in a small closed space. If there is a place which is very, very small, okay, so that means not even a single person will find himself comfortable to stay there for a while, right? And obviously a person who does so will remain, will feel suffocated. Okay, I think you all will agree with me, right? So such a closed space is known as, fear for such a closed place is known as claustrophobia. Phobia means excessive fear, and its opposite is mania. MANIA. Mania denotes excessive but fondness or liking for something. So exactly 20 questions are done, and we are left with remaining 20. 21. The movie will create tension in the Indian history, in the Indian society. So this question is on active passive. So what you see here is is a sentence in its active form, and we are supposed to passivize this sentence right now. Okay, so the answer should be make passive. The instruction should be make passive. See, the movie subject will modal create main verb. Subject की tension in the Indian society. Clear? The tension है तो subject. I'm sorry, object. हम कौन करिबा तो जो अपडेट गाणी सब्जेक्ट करिबा एटा तो फ्यूचर सिंपल देछि तो फ्यूचर सिंपल जब देछि will plus b plus v ते स्ट्रक्चर लागिवो हला देखा would plus b plus v ते देछि कटि गला साल सहित b plus v देछि कटि गला त कैन सहित देछि कटि गला त केवल रहला कोटा एटा ए पार्ट देखन समझते will be created. Very easy question, so there is nothing much challenging. And here is question number 22. Let Sumita help him. Right? Let Sumita help him. See, him is the object of the verb help. Hello? Then let is the transitive verb. Right? Its subject is Sumita. Overall, this sentence is an imperative sentence, isn't it?
if I pacify this sentence then कौन हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो बुझेला तो जो लेट पर कौन अच्छी जो आमर सुमिता अच्छी एटा कौन हो हिम हो लेट हिम बी हेल्प्ड बाय सुमिता सुमिता जोटा कि आई भर्बर कौन अच्छी ऑब्जेक्ट अच्छी तो सब्जेक्ट हो एटा हिमटा जोटा कि एई भर्बर ऑब्जेक्ट अच्छी सेटा कौन हो सब्जेक्ट हो बुझेला तो लेट हिम बी हेल्प्ड सी लेट देम दे जेठी कटिगला बुझेला तापर एठी तमरो कोन देछि ही शुड हेल्प एटा तमरो एक्टिव स्ट्रक्चर पैसिव रो एटा कटिगला तो ए हम डीप आउटलेट काटि देले रहला बी और सी लेट हिम बी हेल्प बाय सुमिता लेट हिम हेल्प तो जो लेट परे जेतो हम कोन करिवा ए वर्ब थार फॉर्म लगेबा तो ता पूर्वरु माने लेट आउ वर्ब थार फॉर्म मझे कंपलसरी कोन बसियो बी बसियो हला एटी बी नाही तमरो कटिगला करेक्ट आंसर कोडा हो बी फॉर बॉम्बे. So let us start. I found the box last night in a ditch near my house. So I'll just do a small, what I should say. I shall try to break down this entire sentence, so for your easy understanding. And please let me know whether you understood or not. So this is the subject in this sentence, and the remaining part is the predicate. There is one verb in the sentence which is in second form, right? So this verb is a transitive verb and its subject is the box, okay, which is a noun phrase. Last night is a noun phrase but it functions as an adverb. Answer up when. Then in a ditch, okay, it's a prepositional phrase. In preposition or ditch object. So near my house again is a prepositional phrase. Near is a preposition and my house is the object. Clear? I found the box last night in a ditch near my house. So ये जो हमर द बॉक्स देछि तो एटा सिंपल पास्ट अछि माने द बॉक्स से तो वाज प्लस विथ लागिवो देखि दियो द बॉक्स से तो वाज प्लस विथ एटी नाही एटी मध्ये तमरो नाही एटी मध्ये नाही करेक्ट आंसर कोडा हो बी द बॉक्स वाज फाउंड लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माय हाउस. So I hope it is crystal clear. Next question. A good deal of money will be made by that investment. See, so it a buyer object देछि एठी. तो एठी देछि तमरो a good deal of money. एटा ए टोटल टा एटा तमरो कोन सब्जेक्ट will plus b3 देछि माने सेंटेंस टा कोथि अछि पैसिव रे अछि. हम समझते जानि छी जे तळे पैसिव रे गोटे सेंटेंस टा थिबो हैला तो कोन थिबो तले हम त देखिया त स्ट्रक्चर कोन तो एटा हमर कोन will plus b3 का स्ट्रक्चर will plus b plus v3 एटा ला तमरो पैसिव स्ट्रक्चर कार फ्यूचर सिंपल रो एठु हमें कोन करिवा हमें देखिया सेही सेंटेंस टा जोथरे अछि कोन तमरो फ्यूचर सिंपल रो एक्टिव स्ट्रक्चर ता माने shall will plus बेस फॉर्म जो थिबो तो तमरो कोन हे जिवो एटा आंसर हबो बुझ पाइले एबे देखो पिले बोलसे एठी हमरो has made देछि एटा ला प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर will be making एटा ला फ्यूचर कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर has been making एटा ला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर. Outrightly all the options except D are eliminated and let us just check whether D is correct from all the angles. So that investment will make a good deal of money. Okay, a good deal of money will be made by that investment. So that investment I was just referring to this noun phrase a minute back, a minute before. Okay, so that investment which was earlier the object of this preposition by now becomes the subject here in the active construction, right? That investment is a noun phrase which functions here as a noun and at the same time parallelly as a subject. And now will helping verb and make functions here as a main verb. So make at the same time is a transitive verb as well. And as it is a transitive verb, so it is followed by the object, a good deal of money, right? So see here it was subject and now it becomes the object here. Okay, things can be understood and can be explained, can be remembered quite easily, but we need to be passionate about what we do. So please keep it in mind. 24 आमर वर्तमान 4-5 सॉरी 10-15 क्वेश्चन अच्छी
तो चलो, the national anthem is being sung, SUNG, sung by Jasal. Most of the students commit mistake here in identifying what is the first and second and third form of song, right? And for those students, here is an explanation. So, sorry, let me erase this. See, just a minute. Just have a look at these words. One is sing, the other one is sang, the other one is sung. See the difference: ing, ang, and ung. So this is the first one is V1 form, second one is V2 form, third one is V3 form. Okay. Got the point? The national anthem is being sung देछि एटा तमर प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव स्ट्रक्चर देछि तो हम कोन करबा एटा एक्टिव करबा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो थ्री एटा आंसर हबो देखो एटी वाच प्लस वी1 प्लस आईएनजी पास्ट कंटीन्यूअस हैला थर्ड पर्सन सिंगुलर पर वर्ब ऑफ एसएस फॉर्म प्रेजेंट सिंपल तो हाज सहित V3 प्रेजेंट परफेक्ट तेणु कटि गला कोटा ए सी एंड डी रहला कोटा एटा बी फॉर बॉम्बे. So now we are moving slowly to the next section, that is jumbled sentences, or in other words it is known as PQRS. So all of you who are preparing for the exam must be aware of it, how questions are asked on this section. Already 1 और 6 no change, प्रारंभ वाला सेंटेंस टा को थ्रू एटू द ग्रेट वॉल नाउन फ्रेज सब्जेक्ट तो जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करिया पे हमें लिखि देले ऑफ चाइना तो को अलग कंट्री हम कोन ग्रेट वॉल तो एटा कहू चाइना तो तापर ऑब्वियसली आसीबो कोन प्रेडिकेट हैला द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज सेड टू बी. देखो जदि हमें बिल्ड लगेबा ना तो तार अर्थ होइजो जे ग्रेट वॉल टा कोन कला बिल्ड कला बुझला तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हिजो. ओके एंड रॉन्ग भी हिजो तो हम कोन करले ए जो इज सहित वर्ब रो थर्ड फॉर्म लगेले एटा को हमें करबा प्रेजेंट सिंपल पैसिव स्ट्रक्चर बुझला. तापर ग्रेट वॉल चाइना विषय रे किछि इन्फॉर्मेशन दिया हिछि तो ता विषय रे किछि कहै छि कोन कहै छि जे एटा होछि गोटे एमितिया स्ट्रक्चर जोटा को हला बिल्ड करा जितला लोक द्वारा कोठी अर्थ रे जोटा कि विजिबल काहू ऑब्जर्वर्स माननको स्पेस रु अथ्य हला. If you want me to put things together and read it right from beginning to end, okay, so the sentence should be read like this: the Great Wall of China is said to be the one structure built by man on earth which is visible to the observers from space, right? So accordingly you try to arrange the options. The first option should be R, second should be Q, third P, fourth S, R, Q, P, S. So this is supposed to be the correct answer. Question number 27. There are only 4 options P, Q, R, S, right? So each option contains sometimes certain phrases, sometimes certain clauses. So now let us see how and in what best way we can solve this question. Okay, what went wrong, right? तो एटा हमें जानि ने कोन रॉन्ग हेला हठात करी कोटे हमहु माने इन्फॉर्मेशन दिया होची जे कोन सेंस के जोड़ा भूल हे को जगह and any sentence which leaves any kind of room for any kind of ambiguity is said to be incorrect, okay, or is deemed to be incorrect. This argument again this ta kon हम जानने तापरे how it हला pronoun एटा भी जानने हमें का विषय को होची तो रहला हम पाखर कोटा p q r को कटला पर s ही हबार सर फर्स्ट कंपलसरी s सब राइट देखि दलो एटी s नाही कि तमर कुतरे ओ अच्छा ठीक अछि अच्छा ओके 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 ची एटा थिला गोटे लॉजिक हमें आ गोटे लॉजिक रे मध्ये एटा को हम कोन कर सॉल्व कर परिबा. So let us go to option number Q. तो जो Q रे तमर एटा देछि कोटा दिस आर्गुमेंट एटा हला हमर गोटे नाउन फ्रेज तो नाउन फ्रेज कि नाउन क्लॉज कोन हे परबो सेन सब्जेक्ट हे परिबो कि ऑब्जेक्ट हे परिबो तो हमें गोटे वे रे देखले एटा हे पाइलन जदी अच्छा चालू देखिया एथरे तो दिस आर्गुमेंट को हमें किछ समय नबा हला Q दिस आर्गुमेंट हला तमर को नाउन फ्रेज सब्जेक्ट
तो तापर कोन दरकार प्रेडिकेट दरकार तो प्रेडिकेट देखो इट देछि एक्सप्लेन्स हैला तेनु आमे कोन करिवा क्यू पर रखिया एस को क्यूएस देखला अछि कि यस क्यूएस अछि तापर व्हाट आसीबो व्हाट वेंट रॉन्ग तापर आसीबो कोटा नॉर हाउ इट शुड बी पुट राइट क्लियर तो सेनेस्टा जदि हम पढिबा ताले एमति पढिबा दिस आर्गुमेंट नाइदर एक्सप्लेन्स ए जो आर्गुमेंटटा ना एक्सप्लेन करे जे गोटे जिंसटा कोन हैला कोन प्रॉब्लम हैला ना एटा को केमिति ठीक करा जाय पारियो तामाने से प्रॉब्लम ता कोन ताकू एक्सप्लेन करेनी केमिति ठीक करा जाय पारियो सेटा को ताकू मध्ये एक्सप्लेन करे नाही आई होप you all understood it. So now let us move on to the next question. Question number 28. To make a life never get so busy a living that you forget making. Okay, it's a wonderful question and it is packed with a lot of meanings, right? So now let me tell you that the first option is going to be option number 3. I mean Q here. Never get so busy. So this is an imperative sentence. Clear? So here the subject, understood subject is you. You never get so busy making a living that you forget to make a life. बुझेला तार अर्थ होची तमे तमरो माने जीविका अर्जन करिया पछरे एते बिजी रहि जाय ना जे तमे कोन करिवो तो जीवनटा को बंचवाटा भूली जिवो ओके so this is the correct answer the order should be q followed by r okay never get so busy no sorry not r it should be s extremely sorry for that so it should be dear students q followed by s followed by then r then p qsrp so this is going to be the correct answer. Now 12 questions are left. We will discuss those questions beautifully and we'll try to see if we get any sorts of doubts. It will be immediately clarified by me. Okay. The success of a man depends on his attention in business to little things. बुझेला से कहय चाहूँ गोटे लोकर जब बिजनेसमैन से हम चाहूँ बिजनेस करिया चाहूँ ताले तार प्रत्येक छोट छोट जिंस ऊपर हैला जदी नजर रहिला ताल से सक्सेसफुल हे पारे जदी सेटा न रहिला ताले से सक्सेसफुल हे परियो नाही तेनु एटा डिपेंड करछि तार जो लिटिल थिंग्स ऊपर केते कोन अछि अटेंशन अछि राइट तो केमति लिखिया ताले ठी देखो डिपेंड्स टा वर्ब टा ए बार सब्जेक्ट हे परिबोनी एटा प्रीपोजिशनल फ्रेज टा सब्जेक्ट हे परिबोनी एटा मध्ये प्रीपोजिशनल फ्रेज सब्जेक्ट हे परिबोनी तो करेक्ट आंसर कोटा हबो p will definitely come first right and now you can see all the remaining options are eliminated outrightly so the last option is correct answer c let us go to the order first p will come first followed by r right the success of a man both success business रे तापर पळेला कोन एटा ला सब्जेक्ट हला थर्ड पर्सन सिंगुलर रे रछि तमर सेंटेंस टा से लागि डिपेंड रे हम एस लगे देले डिपेंड्स पर ऑन बसे तो जो डिपेंड ऑन रो ऑब्जेक्ट होच कि हिज अटेंशन पर टू बसे अटेंशन टू समथिंग डिपेंड ऑन समथिंग क्लियर हला समझते तो दैट इज हाउ यू हैव टू आंसर so we are inching closer towards the end only left by some 10 odd questions so let us solve those questions as well. Question number 30. She had taken a seat. I put a woolen rug after over her knees. गोटे लोक कहूँ जे जो आ गोटे लोक कौन कला आराम से बसला ता सीट रे बुझला तो तार जो नीज रे ऊपर में कौन कली तार वुलन रग टा रखली जोटा से मे बी आनथला कोन पर्पस पाई ओके ताले केम देव ए जो प्रीपोजिशनल फ्रेज रो ही आराम हो सेनेस्टा आफ्टर शी हैड टेकन ए सीट ए गोटे सीट नेला परे तो मु कोन कली मु रखिली कोन ए वुलन रग ए जो वुलन रग टा तमर ऑब्जेक्ट कार ए फुट रखिली ओवर नीज तार नीज ऊपर हैला तो करेक्ट ऑर्डर शुड बी सी ए then b d c a b d it's here. Only 10 questions left. The last 10 questions must be heard by you with impeccable attention. Okay, just a minute. Find the antonym of the given word disconsolate.
See, disconsolate is an adjective. Disconsolate refers to the state of being extremely sad. Hello? If you are sad, if you are lazy, if you are dull, if you are disgruntled and disappointed, then you are disconsolate. Clear? And its antonym. We are asked to give it some supply its antonym. So here is the antonym, that is joyous. Right? It is also an adjective. The remaining words are not that important to discuss here. If you are serious, you will never leave any word unattempted, and I am sure you are. 32. Find the antonym of the given word disavowal. Disavowal. Okay. See, disavowal is a noun which means the denial of taking up responsibility. माने गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमके दउची तो तमे ताकू कोन करछो नबा को मना कर दोछो सो दैट इज नोन एज डिसअवॉल क्लियर सो दे जो dis हमरो कोन देची रूट वर्ड देची तमे कहि परियो प्रीफिक्स देची तो आर अर्थ होई सबले कोन नेगेटिव जेमति कि डिससैटिस्फैक्शन ओके सो आर सिनोनिम कोन आर एंटोनिम कोन हिजो अप्रूवल अप्रूव करिवा कोनसी जिंस माने कोन एक्सेप्ट करिवा हला डिसअवॉल अवॉल अर्थ कोन कहलेबे एटा डिसअप्रूव करिवा बा रिजेक्ट करिवा ओके so now let's go to the next question 33 find the antonym of the given word placid and dear students let me tell you the meaning of placid placid is an adjective okay यार अर्थ होची calm quiet हला peaceful बुझला तो तार एंटोनिम देची ताले कोन बेटा storm stormy हला stormy तो आसे झड़ तूफान केमती आसे सब प्रकार माने पानी ये हमर पवन हड़हड़ी बिजुली ओके तो ये सब जिंस आसे तो ताकू का स्टर्मी स्टर्मी इज एन एडजेक्टिव placid the meaning of which I have already told you is also an adjective here is another beautiful question question number 34 find the synonym of the given word ineffable ineffable is something which cannot be described or expressed in terms of words right and if you look at all the options given here minutely then this is going to be the best or the befitting the most befitting option okay inexplicable inexplicable means something which cannot be explained so here we are at the last almost on the verge of ending okay find the synonym of the given word espionage so espionage is the act of spying गुप्तचर जानथिबो spying करिवा synonym देछि तो करेक्ट आंसर कोन हिजबो एटा spying आ जो बाकी वर्ड सब अछि सब पिला मानन को मोर गोटे छोटिया सजेशन बा रिकमेंडेशन सब जक वर्ड गोटे लिस्ट बनियंतु गोटे खाता करंतु वोकैब्स पाई हला जो टॉप वर्ड के आसुची एग्जाम्स रे हला एग्जाम फ्रेंडली एग्जाम रिलेटेड तो सेगुडा को कोन करिया प्रैक्टिस करिया हला आ जो सब जक कर दे परबो ताले सो फार सो गुड so it will be like a like an ice on the cake on the cake okay so he asked which chair he is to sit on देखि दियाटी एटा हला तमरो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट रे अछि सॉरी प्रेजेंट रे अछि तो हम जो जगह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट तब काटी देबा देखो एटी पास्ट रे कटि गेला एटी पास्ट रे कटि गेला हला एठी तमरो पास्ट रे कटि गेला करेक्ट आंसर कोडा हो सी he asks which chair he is to sit on एटा तमरो कोन अछि हमरो कोतरे इनडायरेक्ट नरेशन रे अछि तो तार डायरेक्ट नरेशन हम पचलियर अछि तनो हम एटी देखिया जे आगे देखिया कोन रिपोर्टिंग वर्ब तक अछि पास्ट रे आई एम सॉरी प्रेजेंट रे बारंबार पास्ट को जो तो रिपोर्टिंग वर्ब जदि प्रेजेंट रे अछि ताले रिपोर्टेड स्पीच को हमें पास्ट लिख पाइबा नै मनैला एटा मन रख तो करेक्ट आंसर कोडा हिजो सी हिजो so now 37 I will put the key here state the caretaker la एटा indirect speech रे अछि ना direct speech रे अछि direct speech रे अछि so this time you find the reporting verb at the end which is again in past tense
and I have already told you and I have been telling you time and again that your focus should be outright on the reporting verb if it is in past tense, and if there is will followed by V1 form in the reported speech, then what we are supposed to do? What are we supposed to do? Will should be changed into would. देखो एटी will अच्छी कटिगला क्लियर है बे अच्छा तो कोटा कटला बी कटिगला तो ए दिस इज द कैरेक्टर नो द केयरटेकर सेज हबनी कारण रिपोर्टिंग फॉर पास्ट अछि ए कटिगला सी डी भितर द कैरेक्टर सेड दैट ही वुड पुट द की देयर तापर डी रे द कैरेक्टर केयरटेकर सेड दैट ही वुड बी पुट ए जो स्ट्रक्चर लिखा है ही वुड बी पुट एटा तो वुड ओके करेक्ट आंसर शुड बी सी 38. My mother says, I have often told you not to play with fire. Okay, play. देखो my mother says ला तुम्हारा reporting verb जोटा कि कोस represent अच्छी second part I have told present perfect अच्छी तेरा past perfect है जीवो तो बर्तन देखी दियो my mother has often told me है तो इटा तुम्हारा हबना ही कारण इटी तुम्हारा says अच्छी तो says जो तेरे नहीं कटी जीवो देखो इटा कटला तनु रोइला कोटा COD my mother says that ठीक अच्छी तो एटी तो दैट नहीं ऑप्शन ओडी रे सी अपन टेल्स मी एटा भी हबनी हैला तो प्रेजेंट परफेक्ट अच्छी तो प्रेजेंट परफेक्ट रे ही रहइबो काहे की कारण रिपोर्टिंग वर्ब हमरो अच्छी बहुत रे प्रेजेंट रे so we are left with a couple of questions only 39 the boss said please give me the latest reports reporting verb is in past tense. So this is a positive imperative sentence, positive imperative structure. So what are we supposed to change here? Me will be changed. Hela. Abu banda ko malaki to ati